the Lahore High Court and the Appellate Court, which was this court. This question we approach and answer considering whether the trial court and the appellate court attended to and dealt with the requirements of due process and fair trial. The reference filed by the President of Pakistan has provided us an opportunity to reflect upon the proceedings of the trial, conviction and death sentence of Mr. Bhutto under the regime of the military dictator General Ziaul Haq. The reference was filed during the government of the political party founded by Mr. Bhutto, but the successive governments of other major political parties carried forward this inquiry and did not opt to withdraw the reference, which included when we were hearing the matter, the caretaker government. This collective interest reflects the widespread desire of the people of Pakistan to seek the opinion of this court on whether Mr. Bhutto was afforded a fair trial and due process for his trial for the murder of Mr. Muhammad Ahmad Khan Kasuri. With the able assistance of the eminent legal minds of the country, we, for the reasons to be recorded later and subject to amplifications and explanations made therein, render an opinion on the referred questions in the following terms. Now I'll read the questions. There were a number of 5 questions. Whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shaheed Zulfiqar Bhutto meets the requirements of fundamental rights as guaranteed under Article 4, Sub-Articles 1 and 2A, Article 8, 9, 10A, due process, and Article 14 and 25 of the Constitution. If it does not, its effect and consequences. I should clarify these questions were already framed when we heard the matter. And our opinion is as under. The proceedings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan do not meet the requirements of the fundamental right to a fair trial and due process enshrined in Articles 4 and 9 of the Constitution and later guaranteed as a separate and independent fundamental right under Article 10A of the Constitution. At the relevant time, Article 10A wasn't part of the Constitution, but the principles enunciated therein have always been part of our jurisprudence. The second part of the opinion of this question is, the question and the Constitution and the law do not provide a mechanism to set aside the judgment whereby Mr. Bhutto was convicted and sentenced. The said judgment attained finality after the dismissal of the review petition by this court. Question number 2 was whether the conviction leading to execution of Shaheed Zulfiqar Bhutto could be termed as a decision of the Supreme Court binding on all courts, being based upon or enunciating the principle of law in terms of Article 189 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, if not its effect and consequences. And our opinion is, reference questions do not specify the principle of law enunciated by this court in the Zulfiqar Bhutto case, regarding which our opinion is sought. Therefore, it cannot be answered whether any principle of law enunciated in Zulfiqar Bhutto case has already been descended to or overruled. Questions number 3 and 5 we have taken together, and these are respectively: whether in the peculiar circumstances of this case, awarding and maintaining of the death sentence was justified, or it could amount to deliberate murder, keeping in view the glaring bias against Shaheed Zulfiqar Bhutto. And question 5 was whether, on the basis of conclusions arrived at and inferences drawn from the evidence material in the case, an order for conviction and sentence against Shaheed Zulfiqar Bhutto could have been recorded. And our opinion is, in its advisory jurisdiction under Article 186 of the Constitution, this court cannot reappraise the evidence and undo the decision of the case. However, in our detailed reasons, we shall identify the major constitutional and legal lapses that had occurred with regard to fair trial and due process. So we did not find that the fair trial and due process requirements were met. So that's what we have really focused on. Question number 4 referred to Islamic injunctions, and our opinion, we kept asking repeatedly that we needed assistance but was not rendered. So our opinion is we were not rendered any assistance on this question. Therefore, it would be inappropriate to render an opinion on the Islamic aspects. So basically our opinion is that the late Mr. Zulfiqar Bhutto did not get a fair trial, and it was not
in accordance with the Constitution requirement of due process. Try to have it rendered into Urdu as well and put up this on the website. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस पर राय सुना रही है और तफसीलात के मुताबिक क्या जुल्फ़िकार भुट्टो के ट्रायल में कानूनी तकाज़े पूरे किए गए। सदर ने रेफरेंस दायर करके जुल्फ़िकार भुट्टो फैसले को देखने का मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये डेवलपमेंट जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस पर ये राय सुनाई जा रही है। कानूनी तकाज़े पूरे किए गए, ये सवाल किया गया। सदर ने रेफरेंस दायर करके जुल्फ़िकार भुट्टो को देखने का मौका दिया। रेफरेंस का मकसद जुल्फ़िकार भुट्टो की आमदनी के दौर में फांसी पर राय हासिल करना था। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कानून बुनियादी हकूक़ के तकाज़े पूरे नहीं हुए। भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक़ नहीं मिला। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। सदारती रेफरेंस में शवाहिद का जायज़ा नहीं ले सकते, ये कहा चीफ जस्टिस ने। सदारती रेफरेंस पर 9 रुकनी बेंच का मुतफ़िक़ा ये फ़ैसला है, राय सामने आई। क्या जुल्फ़िकार भुट्टो के ट्रायल में कानूनी तकाज़े पूरे किए गए, ये सवाल किया गया। सदर ने रेफरेंस दायर करके जुल्फ़िकार भुट्टो फ़ैसले को देखने का मौका दिया। रेफरेंस का मकसद जुल्फ़िकार भुट्टो की आमरीत के दौर में फांसी पर ये कहा गया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कानूनी बुनियादी हकूक़ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक़ नहीं मिला। चीफ जस्टिस के ये अहम तरीन रिमार्क्स। सदारती रेफरेंस पर 9 रुकनी बेंच का मुतफ़िक़ा ये फ़ैसला है, राय सामने आई। क्या जुल्फ़िकार भुट्टो के ट्रायल में कानूनी तकाज़े पूरे किए गए, ये अहम सवाल किया गया। रेफरेंस दायर करके जुल्फ़िकार भुट्टो के हवाले से कहा गया कि मकसद जुल्फ़िकार भुट्टो की आमरीत के दौर में फांसी पर राय हासिल करना थी। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से भी कहा गया, ये रिमार्क्स भी सामने आए हैं। और चीफ जस्टिस के अहम तरीन रिमार्क्स, ट्रायल आइन और तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का ये अहम राय सामने आई है। आइन और तरीक़ेकार के तहत कहा गया जुल्फ़िकार भुट्टो का ट्रायल आइन और तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं था। ये तफसीलात सामने आई हैं और मज़ीद चीफ जस्टिस की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए हैं। हम जजेज़ पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फ़ैसला करें, ये रिमार्क्स दिए गए। मज़ीद ये भी कहा गया कि भुट्टो का ट्रायल आइन और तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं था। अहम ये रेफरेंस और इस पर अब ये राय सामने आ रही है कि जुल्फ़िकार भुट्टो का ट्रायल आइन और तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं था। मज़ीद ये कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस पर ये रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। इमरान वसीम ने हमें ज्वाइन किया, नुमाइंदा एक न्यूज़, उनसे जानते हैं। इमरान, मज़ीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? हम रब्ता करने की भी कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं, जो राय सामने आई है, भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक़ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो का ट्रायल आइन और तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं था। जुल्फ़िकार भुट्टो का ट्रायल आइन और तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं था।